Acha, 1 cup of tea is enough. Yeah, I too needed 1 cup of tea. Okay, Davangere students, good evening. How are you? Yes. Okay. I guess most of you joined. Davangere students, good evening. Ballari students, good evening. Harshita, good evening. Anjali, Aishwarya, good evening. How are you all? Parth, Rutuja, Shubham, Sweetie, Tirth, Krishna, Vishal, and Janvi Davangere again. Okay, good evening, everyone. How are you all? Very nice. Very good evening. So, as students are joining, let's do one thing. Okay, let's take a quick technical check, and please let me know using the poll: is my audio, is my video, as in the presentation, is visible or not? Okay, is my audio perfectly audible or not? Sweetie, I'm good. Thank you. I'm launching the poll. Okay, I'm launching the technical check poll. Here's the poll. So please answer the poll, students. Amrita, good evening. YouTube students, good evening. How are you all? Good evening. Yes. Okay. So most of you are answering. Yes. Okay. Good. 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 So give me a second once. So let me know how is the weather in your side. Is it hot or is it very very cold? How is the weather in your side and all? Okay. So most of you have answered that every technical criteria has been satisfied and my audio and my video is clear. Okay. It's not clear. Am I not audible? Harshada, okay, it's too odd. Yes, same here, it's too odd. Anjali, I'm good. Thank you. How are you? Namaskara, Chitradurga students. Namaskara, namaskara. Yes, you are audible. Okay, Shubham. Shubham Lal. Where are you from, Shubham? Aishwarya. Okay, good, good. Okay, thank you. So I'm ending the poll. Thank you, students. Okay, someone has raised the hand. Syed, what happened? Is there an issue? Let me know, Syed. Amrita. Amrita, I didn't get you what? Can I know NEET and JEE class going on? Can please tell and me also hellos to which class? I didn't get you, Amrita. Please type it properly. Yes. Hello. Hi. Okay. Good. 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 Now. Yes. Now myself, Samanvit, your Avanti faculty of what? Which subject I teach? Hopefully you remember which subject I teach. Yes. Do you know which subject I teach? Students, do you know? Okay, yes, I do teach what? Physics. Very nice. Okay. Okay, Amrita, you want the timetable of JEE NEET class? You're asking that? Yes, yes, yes. Very good. I'm your physics faculty from Avantifellows. Welcome to today's class. Poonam, thank you. Okay, so before going ahead, let us quickly go through what we are going to study today. Today, it will be basically what? The numerical what solving, okay? In the last class, we talked about what? Conservation of energy. You hope you remember. Yes or no, students? Conservation of energy. Yes or no? In that we arrived at a formula or let's say at an equation which will actually help you understand what how to solve the problems regarding regarding the forces that were acting on the body. Yes, and there is a recall question. Recall question is basically the homework question, yesterday's homework question. I hope you have solved it. Let me know who and all solved it. Okay, in yesterday's class someone had given the answer also. Two students are given the answer also. Very good. Now next it will be numericals on conservation of energy. We'll be solving very little complicated problems, but I'll make sure that you will understand those problems. Okay, then it will be the summary of the session. Yes, that's all for today. Okay, only numerical solution will be there over here. Okay, Amrita, see 11th class will start from 3 o'clock, okay, 3 p.m. in the evening, and it will go up to 8. Okay, that is my physics. So 3 to 4:15 is maths and biology. Yes, 5:30 to 6:30 is chemistry, and from 6:45 to 7:45 it's what? Physics. Is it good?
And also you can join the seed batch. You will get to know all the details over it. Okay. Now, if that is the case, what did we study, students, in the last class? We talked about conservation of energy. Yes, students. What was it? Do you remember what we did in yesterday's class? We had a wall, let's say, sorry, we had a wall, and the wall was attached to what, students? Do you remember? What was it attached to? There was a spring over here. There was a mass over here, which was attached to the wall. Yes, there was a mass M, mass and spring. Yes, very good. And there's a external force that was acting. And I wanted to know which and all force that was acting on this body. So you said there was acting what? M into G. There was a force that is acting, and there was a F, what, normal force that was acting. And also there was what, if this is a rough surface, if this is a rough surface, then what was acting, students? Frictional force was acting. Anything else that is missing? Anything else? Any other force that is acting? Missing, students? Let me know. Yes, there was a spring force that also acted. Yes. And using what? Using the second law of motion, we proved that what? Fn plus Fsp plus F external plus F frictional plus F what? Mg, or the gravitational force, is equal to M into A. Yes or no, students? From here, we took A to be what? We know what is a change in velocity with respect to time, and I multiply with dx by dx. Yes or no? And we came to know that this quantity is what? dv. So we got A is equal to V into dv by dx. Yes or no, students? And we substituted that over here. Abe, it's okay, no problem at all. At least you joined the session, right? That's very nice. Okay. Now, Amrita, is it clear? Okay. I'll write the at the end of the class, I'll write the timetable clearly, okay, to make sure that you understand it. You can take a screenshot. Yes, very nice. Now, then what did we, students? What did we do? We what equated over here. Now, what did I do? For all these things, I what converted into work done. Students, let me know which are the conservative force over here. I divided into conservative force, non-conservative force, and external force. So which are conservative forces over here? Let me know. Yes, very good. You know the spring force, and what? And the what? This gravity force is a conservative force. So these are the conservative force that are acting. And you know that what? Frictional force is a non-conservative force. Very good. Friction is a non-conservative force. And students, what will happen to normal force? What will happen to normal force? Yes. So we actually converted it into work done. So it was work done by normal force plus work done by the conservative force, work done by the non-conservative force plus work done by the what? External force is equal to M into A is what? V dV by dx. Yes. And you know that work done by the normal force is 0. Why, students? Because the mass was moving in this direction, displacement was happening over here, and the force was acting in this direction, the normal force. And the angle between those two is 90 degree. Yes or no? Hence, we got it to be what? 0. Why? We know that work done is equal to Fs cos theta. बस इतना ही करना था, और कुछ नहीं. इतना ही करना था ना? Yes or no? Yes, very good. Everyone has joined the class. Now, okay, very good. Now, if that is the case, then what did we do, students? Do you remember what did we do? Yes or no? Let me know. I call these forces to be the what? Net force that is acting, and what? Which is equal to M into V into dV by dx. What did I do next? Students, let me know. What did I do next? What was the thing? Basically, it was converted. Why? Yes. See, the thing is, we basically integrated everything over here. Basically, this was what? Force by the what? Net force is equal to M into A. Sorry, M into. Just a second. I need eraser. M into V dV by dx. Then I integrated this. Yes or no? I integrated this from V1 to V2, and I brought the dx over here. I'll get integration of F net dx, which is equal to M into integration of
V dV. Yes or no? I'm not going to the derivation. Okay. So I integrated this and I got the work done. And I got, okay, here I should write it directly. So we got W net, that is work done by the net force, is equal to what, students? We got M into V square by 2 into the limit was from V1 to V2. Yes or no? So I'm skipping very like steps, all the steps that we have done. From here we got, this is the integration step that we did. Then we went over here, we told this is the work done, so we called it as net work done. Yes. Then we got work done by net, which is equal to our students mv2 square by 2 minus mv1 square by 2. इसके बाद क्या किया हमने? Do you remember? इसके बाद हमने क्या किया? स्वीटी, लेट मी नो. इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स? हमने ये रखा कि आप देखो, आपको पता है जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है उसको कैसे लिख सकते हैं? हाँ, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट? Yes, very good. Minus of work done is equal to del U. Yes or no? So what we did was work done by external plus work done by non-conservative is equal to what? ये क्या हो जाएगा? Kinetic energy होगा. So kinetic energy final minus kinetic energy initial. What? Minus, sorry, plus del U. Yes or no, students? And the equation that we got was, what was the equation that we got? Work done by external plus work done by non-conservative is equal to what, students? Let me know in the chat. Jaldi batao. Jaldi. Kinetic energy final plus kinetic energy initial. Sorry, minus. My bad. Kinetic energy final minus kinetic energy what? Initial, and what? Plus potential energy final minus potential energy initial. Yes or no, students? This was the equation that we got. Yes. Let me know in the chat, students. Till here, do you remember or not? जो भी हमने किया, मैंने steps बहुत skip किया है. Okay, I skip lot of steps क्योंकि ये recall था. आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो please go to yesterday's class. In YouTube you will get in Avanti Live 5. In Avanti Live 5. Okay, you will get yesterday's class. Okay, good, very good. Okay, Vishal, very good. Rajendra, very good. Aniket, hello. Yes. Others, please let me know. There are a lot of people. Anjali, Ashwini, let me know. Aishwarya, Suman, Ballari, Bagalkot, Davangere students, North Canada students, Uttar Kannada students. See, JNV students, why you are not replying? What is happening over here? Yake reply martila? Rutuja, please let me know. Shraddha, I'm waiting. Till here, have you understood or not? Because if you haven't understood, I'll try to make sure that you understand in ample amount of time. I can explain you again, okay? Because we are going to solve numericals. So did you understand till here or not? Akka, acha, okay, very good. Swapnil, hello. Yes, okay, very good. Now, the thing was, as I said, most of 80% of the questions that comes, 80% of the questions, क्या होता है इसमें? The external force will be 0 and the work done by the what? Non-conservative force will be 0. Then you get the equation as what, students? अगर मैंने इसको 0 डाला तो क्या होगा? Kinetic energy final minus kinetic energy initial. Yes. Sorry, that is something like this. My bad. We'll get what, students? Kinetic energy final plus potential energy final is equal to what? Kinetic energy initial plus potential energy initial. Yes or no, students? And this equation was called as what, students? Conservation of what? Mechanical energy. Yes, very good. This was called conservation of mechanical energy. Is it good, students? Please let me know in the chat. Yes, very good. So when 80% of the case where students, the work done by the conservative and the non-conservative and the external force, we take as 0. In questions, sometimes it won't be 0, but 80% of the cases, see, since you are preparing for JEE and NEET, okay,
Okay, since you're preparing for JEE and NEET, you need to make sure that you understand this. आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते क्योंकि आप JEE एंड नीट स्टूडेंट्स हो, है कि नहीं? वेरी नाइस। हाँ, वेरी अच्छा। तो आपको कौन सी फॉर्मूला यूज याद रखना है? ये वाला और ये एक बार, ठीक है? इज गुड? यस, वेरी गुड। अगर ऐसी बात है, okay, so this was the same thing that I said, where K1 is the initial kinetic energy, initial potential energy, final and final potential energy। उल्टा भी लिख सकते हो, जो जो भी आपकी मर्जी होगा, ठीक है? लेकिन समझना जरूरी है। इज इट गुड? ठीक है, ओके, इज गुड, वेरी नाइस। अगर ऐसी बात है तो न्यूमेरिकल्स पे चले हम। न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं? विशाल, यश, स्वप्निल, अमृता, लेट मी नो। हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, पक्का पक्का। तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ओके, कल की जो होमवर्क क्वेश्चन था ना, उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो द क्वेश्चन सेड वाज, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो। याद है आपको? सो क्वेश्चन था आपके पास कि मान लो, हाँ हाँ हाँ, यस, देख, ये वाला एक सरफेस था, ठीक है? आपके पास एक बॉल था, वो एच हाइट पे था। आपके पास एक बॉल था, वो एच हाइट पे था, उसका मास एम, ठीक है? वो कहा था एच हाइट पे था। यस, now what will I do is I will make the ball fall down, ठीक है? I'll make the ball to come down, सही है? Now the question said was कि इसका कुछ पोटेंशियल, ये इनिशियल ये था, वेलोसिटी था, ठीक है? मतलब एक मैंने उस बॉल को छोड़ा। ओके ओके भाई, श्योर श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके, टेक योर टाइम and please let me know after joining whether you have understood or not, okay? Very good. Now what is it? This is a ball, ये एक बॉल है, ठीक है? इसने, मैंने क्या करा, एक सरफेस है, यहाँ बॉल है, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, इस बॉल को छोड़ा, ठीक है? मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, ऐसा रखा था, फिर मैंने इसको छोड़ा, फिर वो नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज, आई वांट टू नो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। सो कैन यू सॉल्व दिस स्टूडेंट्स? क्या था? सो व्हाट वाज हैपनिंग? I had a ball, okay? There is a surface over here. I'm just what? Yes, yes, very good, Suman. So I'm just leaving the ball. मुझे जब ये बॉल नीचे आ जाएगा ना, उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये फाइंड आउट करना। So make sure that you're using the formula that we are talking now. I'm giving you exactly 2 minutes of time to solve this. Suman, very good. Okay, you have solved it. Very nice. Bagalkot students, check your answers. Purti, very good. So जिन्होंने जिन्होंने ट्राई नहीं किया ना, जिन्होंने ट्राई नहीं किया, प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। हियर इज अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी गुड स्टूडेंट सुमन, इसका मतलब आप ट्राई कर रहे हो, है ना? सॉल्व कर रहे हो, वेरी गुड। सो आई एम गिविंग यू 2 minutes ऑफ टाइम, सॉल्व दिस। यस, चित्रदुर्ग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड, ओके। एंड स्फूर्ति टू, स्फूर्ति, वेरी गुड। अदर्स प्लीज सॉल्व, सॉल्व करो।
So tip students, please let me know. So everyone is trying or not? Let me know in the chat. बाकी बहुत बहुत लोग हैं, ट्राई ही नहीं किया क्या अभी तक? देखो, पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सी फॉर्मूला यूज करो, ठीक है? रूट ऑफ 20h, नो non-Canada students, is it 20h or what is it? Okay, you took GS10, very good, very nice. Okay, very nice. If that is the case, yes, non-Canada students and also Bagalkot students, very good. Okay, now here दो चीज है, ठीक है? आपको पता है दो फॉर्मूला है आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है दो फॉर्मूला? एक फॉर्मूला है व्हाट, एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस सॉरी फाइनल प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस, ओके सॉरी माइनस, इट शुड बी माइनस। ओके हाँ, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना वैसे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, है कि नहीं? ऐसा ही फॉर्मूला होगा ना, या उल्टा होगा? एक मिनट रुको, हमारे पास ये है तो काइनेटिक एनर्जी ओके सॉरी सॉरी सॉरी, इट वुड बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये आपके पास फॉर्मूला है कि नहीं? वेरी गुड। नाउ अगर ये फॉर्मूला है, आप मुझे ये बताओ whether there is a external force and whether there is F external and F force by non-conservative force in this problem. Students, please let me know. अगर ऐसी बात है तो यहाँ इस प्रॉब्लम में is there any external force and a non-conservative force acting on the body? YouTube students, please let me know. No, very good. There is no force. Yes. अगर ऐसी बात है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना, है कि नहीं? यस पूर्ति सुमन, वेरी गुड। हाँ, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ रहा है अभी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये आपको यूज करना है अभी, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में जब हम सॉल्यूशन करेंगे, मुझे ये बताओ, एक चीज बताओ, यहाँ इस जब बॉल ऊपर होगा उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? u। इनिशियल अगर मान लो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, एट a व्हाट विल बी u? वेरी गुड, जीरो, वेरी नाइस। हाँ, ये आपको पता है, सही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो होगा, वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये जीरो आ गया। हाँ, वेरी गुड, ये आपको ये चाहिए। तो मुझे ये बताओ, ये जो बॉल है ये कितने हाइट पर है? एस हाइट पर है। तो ये मुझे बताओ ये क्या है? ये इनिशियल पोटेंशियल है, इनिशियल व्हाट वेलोसिटी है। ये यू में कंफ्यूज मत हो, ठीक है? ये ऐसे लिखता हूँ और लेट मी डू दिस बी इनिशियल, ठीक है? तो मैं बी इनिशियल लिखता हूँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड सुमन। तो मुझे ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगा? अगर h हाइट पे है, वेरी गुड, तो क्या होगा? mgh होगा, वेरी नाइस। ये दोनों चीज आपको मिला। मुझे ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, वेरी गुड। क्यों? ऊपर से नीचे आ गया ना, ये बॉल जो ऊपर था वो नीचे आ गया, इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ गया। मुझे ये बताओ हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था vf, यस और नो? नाउ सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग इन द इक्वेशन 1। ओके, ये 1 है, तो सब्स्टिट्यूटिंग एवरीथिंग, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी हमें फाइनल फाइंड आउट करना है, दैट इज हाफ m vf स्क्वायर, यस, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है? जीरो है, वेरी गुड, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? जीरो है, एंड सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है? mgh, वेरी गुड। तो मुझे क्या मिल जाएगा? हाफ m vf स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है फाइनल, ये पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल, ये काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल। So mvf स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? mgh, h mm कैंसल्स आउट, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मैं इसको 2 को यहाँ निकल, आई मीन आई विल टेक दैट देयर, vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg and I'll get vf is equal to root of 2mgh. Yes or no students? Let me know in the chat. ये जो आपको मिला यही आंसर आपको मिला कि नहीं? Let me know. Oh sorry, cancels out, right?
ओ यस 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 यस, मैंने गलती से लिखा, माय बैड माय बैड, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो 2GH एंड आई गेट 2GH, वेरी गुड। हाँ, yes yes yes, better students, spurti, very good. So it means you are what, you are concentrating on class, सही है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब अगर आपने g इज इक्वल टू 10 लिखा होगा, अगर g आपने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया होगा, तो आपका आंसर vf इज इक्वल टू रूट ऑफ 20h, बस, ठीक है, 20h। सो आपका दोनों आंसर सही है। ओके स्टूडेंट्स, सो किसने h g पे ये लिखा था, सही है। So students, very good if you have answered the right answer. Yes, Vishal. Okay, very good, very good. सही है ना आंसर यहाँ तक? किसी का डाउट है? मैं स्लोली जा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? Okay, let me know in the chat. Do you understand it or not? Okay, Chitta, good students. What did you not get? Let me know. In the Arthak Lila. See, the ball was at height h. Yes, if the ball is at height h, what will be the? What happened? Acha, acha, acha. Okay, okay, okay. Cool, cool. Yes, very good. If that is the case, are you ready for next question? Let me know in the chat. एक और करे? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस, वेरी गुड। हाँ, तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट, आई विल ड्रॉ दिस, ठीक है। मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है, जज मत करना, जज करोगे तो बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, ये मास है। मैं अभी यहाँ मेरा एक हाथ है, 3 4 5, अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा हो गया, सही है। हाँ, ठीक है। ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये वाला, ये मेरा हाथ है, माई हैंड, ठीक है। मैंने इसको ऐसे रखा है, मास, अगर मान लो मास इधर है, ये मास इधर है, तो ऐसे मैंने ये ऐसे ऐसे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, तो मास इधर रखा है, ठीक है, जज मत करना। ओके, नाउ व्हाट इज इट, आई एम होल्डिंग होल्डिंग द मास, होल्डिंग द मास इनिशियल, ठीक है, ये मास मैंने इनिशियली होल्ड किया। अभी क्वेश्चन है, मतलब ये सेंटेंस है, नाउ इट इज अलाउड टू फॉल, ठीक है। फाइंड एलोगेशन, फाइंड elongation of spring, elongation of spring। देखो क्या हो रहा है, मान लो आपके पास एक स्प्रिंग था, ठीक है, स्प्रिंग के साथ एक मास था, ठीक है, स्प्रिंग के साथ मेरे पास मास था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक मास है, सही है। अब आपने क्या किया कि उस मास को पहले आपने होल्ड किया था, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया कि हाथ को हटा दिया, ठीक है। अगर हाथ को हटा दिया, एक स्प्रिंग है, एक मास है, तो क्या हो जाएगा, लेट मी नो स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा। अगर मेरे एक पास एक मास है, एक स्प्रिंग है, तो अगर मैंने हाथ को हटा दिया सडनली, तो क्या होगा, एलोंगेट होगा, है कि नहीं, यस, एलोंगेट होगा ना। तो ये बोल रहा है एलोंगेट होने के बाद जो एलोंगेशन होगा ना, मतलब मान लो कुछ एलोंगेशन हो गया, एक्स इज द एलोंगेशन, ठीक है, उस एलोंगेशन को फाइंड आउट करो। कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो स्टूडेंट, लेट मी नो इन द चैट, लेट मी नो क्वेश्चन समझ में आया, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और नॉट स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट। अच्छा, क्वेश्चन समझ, ओके, पार्ट डिडंट अंडरस्टैंड, ओके, अदर्स, ओके, सी द क्वेश्चन इज, ओके, others please let me know, where is sweetie, where is JNV students, what is happening, ठीक है, एक मिनट रुको, now I'll explain। क्या हो रहा है कि आपके पास एक स्प्रिंग था, ठीक है, एक मास था, तो आपने पहले क्या क्या किया कि उस स्प्रिंग को, उस मास को आपने हाथ पे रखा था, ठीक है, मतलब एक मास है, एक मास था, एक स्प्रिंग था उसके ऊपर। मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ कुछ स्प्रिंग वगैरह तो कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए कि हाँ, आई डोंट हैव एनीथिंग ओवर हियर, ओके, हाँ हाँ, डोंट वरी, वेट वेट, चित्र स्टूडेंट्स टेक इट एज के ओनली, ओके,
k only. Now, so what was happening? There was a mass with a spring attached. तो मैंने क्या करा, पहले मैंने हाथ को रखा था, ठीक है, तो वही था, तो हाथ को फिर मैंने क्या किया, उसको हटा दिया, सडनली हटा दिया, तो हटाने के बाद वो नीचे जाएगा ना, इसका मतलब मैंने हाथ हटा दिया तो वो नीचे जाएगा ऐसे, है कि नहीं? मान लो ये स्प्रिंग है, ये यहाँ तक आ जाएगा, तो ये बोल रहे जो ये एलोंगेशन हो रहा है ना एक्स, उसको फाइंड आउट करो। आप समझे students? Did you get it? Please try to answer it. Okay, very good. Yes, Path. Now I'm giving you 3 minutes of time to solve it. And also I got an answer from JNV students, Chitradurga students, and who did answer? Yes, I'm giving you timer. Okay, I'm giving you exactly 3 minutes of time. सिर्फ 3 मिनट है आपके पास, 1 करोड़ का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है? 1 करोड़ तो मिलेगा नहीं, लेकिन 1 करोड़ तो बोल तो सकता हो ना, ठीक है? ओके, नाउ द आंसर, स्फूर्ति, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, वेरी नाइस। मैं इसको ना इसका ऑप्शन नहीं दे सकता, अगर आपको ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन सर। अच्छा स्फूर्ति, आपको सॉल्व करना आता है? mg/k 20 k/mg, ठीक है, ये k है, 20 2mg/k, c is 2k/mg। वेरी गुड। ओके, सो कौन से ऑप्शन मिल रहा है हमें? पार्थ, स्फूर्ति, JNV चित्रदुर्ग स्टूडेंट्स, चेक योर आंसर वंस। हाँ हाँ, k/mg, अच्छा पक्का। स्फूर्ति, अच्छा वेरी गुड। पार्थ एंड स्फूर्ति, वेरी वेरी गुड, ठीक है, यू हैव आंसर द राइट आंसर। प्लीज लेट मी नो यूट्यूब स्टूडेंट्स, कौन सी आंसर है बता दो एक बार, ठीक है? मैं ट्राई करने के लिए टाइम दे रहा हूँ। अच्छा पक्का, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ आंसर, वेरी गुड फॉर ट्राइंग। ओके, यस, ओके, चित्रदुर्ग स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके विशाल, विशाल आप आंसर चेंज कर रहे हो क्या, या अभी बोल रहे हो? वेरी नाइस, एवरीवन इज आंसरिंग। ओके, यूट्यूब स्टूडेंट्स लेट मी नो विच इज द ऑप्शन। स्वप्निल, विशाल, अनिकेत, अमृता, राजेंद्र, यूट्यूब स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो कौन सा आंसर है। लास्ट 2 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड टाइम अप। ठीक है, तो देखो, मुझे बहुत मतलब ABCD सब आ गया, ठीक है, सब ऑप्शन आ गया है, और द राइट आंसर इज व्हाट? सी स्टूडेंट, राइट आंसर इज व्हाट? सी। देखो, बहुत लोगों ने मुझे ए आंसर भी दिया है, ठीक है, ए आंसर, बी आंसर एंड सी आंसर भी दिया है। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ यू वुड हैव टेकन दिस एज द आंसर। बहुत लोगों ने ए भी दिया है और बी भी दिया है। देखो, पहली बात तो जो होशियार बच्चे हैं ना, उन्होंने क्या किया, एक मास लिया m, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ इस मास पे एक kx फोर्स एक्ट कर रहा है, या है mg, देन आई टेक kx इज इक्वल टू mg एंड x क्या हो जाएगा, mg by k। ये इस तरीका को, और दिस मेथड हु एंड ऑल डिड,
Who and all tried this method? Let me know in the chat. ये मेथड किस किसने किया है और किस किसने ये आंसर बोला है? देखो उन्होंने क्या बोला कि देखो एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, एफएसपी आपको पता है कि ये के है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना है माइनस के एक्स, यस और नो, सही है। एंड उन्होंने क्या किया कि एमजी एक्ट कर रहे नीचे, तो उन्होंने क्या किया के एक्स इज इक्वल एम जी, के एक्स इज इक्वल एम जी बाई के। ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। क्यों? यू कैन अप्लाई दिस when when the what the mass in equilibrium, mass is in equilibrium। ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब मास इक्विलिब्रियम में। मतलब इसका मतलब क्या है कि मास को, जो मास है ना स्प्रिंग से जो अटैच्ड है, when the mass is attached to spring and you are allowing it to come down slowly, then you can apply this। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बोला है ना, वो क्या बोला, इट इज अलाउड टू फॉल। इसका मतलब क्या, मैंने ऐसा रखा, मैंने हाथ हटा दिया, बस यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट? देखो पहली बात तो मुझे ये बताओ, एक ये से था, ठीक है, एंड वी हैड अ स्प्रिंग, पहले यहाँ था। सो स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, अगर मेरे हाथ यहाँ था, मैंने उसको हटा दिया, तो स्प्रिंग यहाँ नहीं आ जाएगा? सेम स्प्रिंग, मास यहाँ नहीं आ जाएगा, सही है? यस और नो स्टूडेंट्स? ये जो डायग्राम मैं जो कर रहा हूँ सही है? तो मैं इस डिस्टेंस को x मान सकता हूँ, यस और नो? एंड दिस इज द एलोंगेशन। स्टूडेंट्स मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, बताओ पहली बात तो। लेट मी नो, लेट मी नो। आई एम ओके, वेरी गुड। लेट मी नो स्टूडेंट्स, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ओके, वेरी गुड, नाइस। हाँ, तो देखो पहली बात तो यहाँ जो फाइनल जो इक्वेशन यूज करना है, देखो मुझे ये बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कोई एक्ट कर रहा है? नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक फ्रिक्शनल फोर्स है, वो भी नहीं है, सही है ना? ये दोनों नहीं है ना? तो कैन आई राइट द इक्वेशन दैट टू बी यूज, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक व्हाट पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये ले सकता हूँ? कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? यस। तो मुझे ये बताओ, वेरी गुड, वेरी गुड ऐश्वर्या, वेरी नाइस। So students, over here, what will we do is, here we are going to take a baseline, ठीक है? एक baseline लेंगे, ये वाला जो लाइन है ये baseline है, ये हम मानते हैं in order to solve this। So students मुझे ये बताओ, इस लाइन पे, इस baseline पे, इसको baseline मानेंगे, मुझे ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जीरो होगा ना स्फूर्ति? इट विल बी जीरो। व्हाई? वी आर टेकिंग दैट एज अ रेफरेंस पॉइंट। आई डिडंट लीव इट, आई एम कंसीडरिंग ओवर हियर। यस और नो? वेरी गुड। और मुझे ये बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो देखना है कि कैसा आ रहा है। मुझे ये बताओ, यहाँ इन दिस सिचुएशन, लाइक यहाँ इस सिचुएशन में, आर देयर ओनली वन पोटेंशियल एनर्जी अराइजिंग और टू पोटेंशियल एनर्जी अराइजिंग? देखो एक बेस लाइन है, सही है, बेस लाइन से वो एक्स डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आफ्टर एलोंगेशन, आफ्टर व्हाट एलोंगेशन, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी विल बी ड्यू टू टू रीजन, ठीक है? एक रीजन होगा जो बेसलाइन है ना, ऑन माय वीडियो, सॉरी। एक रीजन है, आपके पास एक बेसलाइन था, उससे नीचे आ गया, एक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, एक और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग से नहीं आ जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? सो वन पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट ड्यू टू द बेसलाइन। तो बेसलाइन से नीचे आ गया ना, मतलब जीरो से नीचे आ गया, तो कैन आई राइट माइनस mgx? yes, and another one, this is first potential energy, the second one will be due to what? The spring। so spring का potential energy क्या होगा? half kx square,
तो स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो ये आपको समझ में आया कि नहीं. Let me know, students. So the potential energy will be what? Due to two reasons. One is due to what? It is coming down due to the elongation. और एक और क्यों? क्योंकि हमारे पास स्प्रिंग है कि नहीं? अरे वही अमृता, that is the spring force, right? So see, पहले क्या था? काइनेटिक एनर्जी, वो जो आ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना अमृता, बेसिकली. जब आपने रखा फिर उसको छोड़ दिया, बेसिकली आप पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो. यस एवरीवन, इट्स क्लियर? वेरी गुड. तो मैं इन सारे चीजों को यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ. सो स्टूडेंट्स, व्हाट विल आई गेट? व्हाट विल आई गेट स्टूडेंट्स? विल आई गेट हाफ kx स्क्वायर माइनस mgx इज इक्वल टू 0 प्लस 0, है कि नहीं? यस और नो? एंड विल आई गेट हाफ kx square is equal to mgx. Okay, wait students, बड़े स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, ओके, वेट आई एक्सप्लेन. देखो, पहली बात तो हमें पता चला कि F एक्सटर्नल और F फ्रिक्शनल फोर्स नॉट प्रेजेंट. ठीक है, अगर नॉट प्रेजेंट है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज 0, देन वी गॉट दिस इक्वेशन. सही है. नाउ अभी मैंने क्या माना? मैंने बेस लाइन माना. ठीक है, मैंने इसको बेस लाइन माना. एक बेस लाइन है, उस बेस लाइन मतलब जब मैंने हाथ रखा था, ऐसा नो, उसके बाद मैंने हाथ को हटा दिया. यस. तो मुझे ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 होगा, ये सही बात है, एंड पोटेंशियल एनर्जी 0, ये सही है. यहां तक सही है? सुमन एंड बल्लरी स्टूडेंट्स, एवरीवन, इज इट क्लियर टिल नाउ? हाँ, बल्लरी स्टूडेंट्स, let me know, Ballari students. I won't proceed until you say yes. Very good students, very good. हाँ, very good. Now मुझे ये बताओ, अगर मैंने, देखो आपको पता है कि अगर मैंने एक बेस लाइन से उसको छोड़ा तो वो नीचे आ जाएगा, एलोंगेशन होगा. तो मुझे ये बताओ, स्प्रिंग की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यस, होगा. हाँ, और एक और चीज है, जो एलोंगेशन होगा वो एक क्या, एक बेस लाइन की वजह से होगा ना विशाल? वेरी गुड. एक बेस लाइन है ना, जैसे मान लो एक बेस लाइन था और ये यहां रखा मैंने, तो ये क्या था? एच था, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी था? mgh. लेकिन अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, बेसिकली एक बेस लाइन से मैं उसको छोड़ रहा हूँ. अगर मैंने उसको छोड़ा, एक और पोटेंशियल एनर्जी आएगा. वो क्यों आएगा? वो एलोंगेशन की वजह से आएगा, क्योंकि बेस लाइन से मैं x डिस्टेंस नीचे आ गया ना, इसलिए मैं ये ले रहा हूं. स्टूडेंट्स, अब पता चला क्यों? स्टूडेंट्स, बल्लरी स्टूडेंट्स, लेट मी नो. इट इज ड्यू टू बोथ. एक तो स्प्रिंग है. देखो, अगर स्प्रिंग के अलावा कुछ और होता, स्प्रिंग नहीं आता. ठीक है, स्प्रिंग की पोटेंशियल नहीं आता. लेकिन अभी जो आ रहा है, अभी स्प्रिंग भी आ रहा है और एलोंगेशन की वजह से आ रहा है. सही है, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट व्हाट आई डिड वाज आई व्हाट अप्लाइड एवरीथिंग ओवर हियर. सुमन, इज इट क्लियर? देन आई विल गेट, मैंने एक x को मारा, so half kx is equal to m into g. Yes, and I'll get x is equal to 2mg by k, and this was your answer, student. This was your answer. Yes, is it clear or not? Let me know in the chat, students. Let me know. 2mg by. Okay, very good. Nice. Yes, सबको समझ में आया? सही है. ओके, तो एक और कर सकते हो, हम एक और क्वेश्चन करें. यस, ओके, वेरी गुड. हाँ, एक और चीज देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा ना चित्रगुप्त स्टूडेंट्स. द फाइनल सी, इफ आई लीव दैट, एक टाइम के बाद तो नीचे आएगा. देखो, don't think about the harmonic motion. Okay,
वो ऑसिलेशन होगा, वो पता है मुझे, लेकिन हम एक टाइम पे ले रहे हैं, ठीक है। ओनली एट अ पॉइंट इट विल बी व्हाट, the spring, if I remove the mass, okay, I know that what you're considering is going oscillation, it will do oscillation, that do I agree. But we are considering the case where at an instant, at a time, it will be at rest, है कि नहीं, ये एक रेस्ट पे रहेगा, yes or no, it will be at rest. So उस instant पे हम actually find out करें. Is it good, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಯ್ತಾ? ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು 0 ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆನಾ? Is it good? So that is why I took this as 0, this as 0, and this as 0. Okay, I didn't tell that, right? Sorry. Okay, sorry, my bad. Okay, so we take kinetic energy final to be 0 because we take at a particular instant. मतलब एक टाइम पे वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे होगा, इसलिए हम 0 दे रहे हैं. When see there, there we find the potential, what kinetic energy over there, right? Here we are considering the point. See, if you tell that it is going to hit, okay, and it is going there at a particular point, we are telling, see, those are where we take the velocity not to be 0. See, the thing is, the first question that I said was the initial was 0, and I wanted the what I wanted the velocity when it is reaching the ground. It is not yet reached the ground. Did you get it? Did I say it has reached the ground? No, it is reaching the ground at a velocity, at a time, or at let's say before like hitting the ground. Yeah, after hitting it will obviously be 0. Yes, the kinetic energy will be 0. Why? It is going to fall down and it will what? Fall on the floor. Yes, that do I agree. But see, these are the cases that is considered. Okay, here also we take the consideration that this mass is going to be stored stationary at a particular time. That is why we take the kinetic energy as 0. But see, physics is a subject where you take things, things into consideration. Okay, is it good? Very good. Amrita, आयता means आया, कि आपको समझ में आया. Okay, Rajendra, I explained it right again. Did you get it now? Yes. Okay, very good. Now if that is the case, let us go to another question now. एक और क्वेश्चन में जाए. Let me know, students. Are you ready for another question? Rajendra, I explained it again. Please let me know. Okay. Okay, Suman, others, let me know. सिर्फ सुमन ही रिप्लाई दे रहा है, कोई और भी रिप्लाई दे दो. क्या कर रहे हो? क्या पसंद नहीं आ रहा है क्या क्लास? ये बताओ मुझे पहली बात तो. क्लास पसंद नहीं आ रहा है या दिमाग की दही हो रहा है? सर क्या क्या क्वेश्चंस करवा रहे हो? हाँ, ये कब आएगा सर? अरे है ना, ये कब आएगा सर? इतना इतना इतना, आई मीन so much tough questions. When we are going to solve it, sir? अरे विशाल, थैंक यू. पा, थैंक यू. स्फूर्ति, थैंक यू. बट हाँ, कभी कभी लगता है ना सर, बड़े बड़े वही है ना, वो व्हाट इज द लाइन, बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती है ना. I don't know whether my dialogue is correct or not. Yes, so these are very simple questions. Okay, एक बार आपको समझ में आया तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो. बस इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या है. अरे थैंक यू सुमन. अरे ओके, सो द थिंग इज, once you know, see इस क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो, द बेसिक थिंग इज आपको फाइंड आउट करना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है. बस कौन सा, इनिशियल एंड फाइनल. एक और चीज आपको फाइंड आउट करना है कि जो फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा या इंटरनल, मतलब जो भी फोर्सेस होगा, नॉर्मल या स्प्रिंग फोर्स, वो एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखना पड़ेगा आपको, बस और कुछ नहीं. यस, बस इतना ही चेक करना है. ठीक है कि नहीं? और आपको पता है जो स्प्रिंग फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, हम उसको कन्वर्ट कर चुके हैं किस चीज से, पोटेंशियल में कन्वर्ट कर चुके हैं, है कि नहीं?
Amrita, okay, Rajendra, Vishal, okay, very good. Yes, very good. Now, if this case, okay. Now there is a surface. ठीक है, ये surface है. The okay, sorry, I bit my tongue. Sorry. There is a rough surface. ठीक है, एक rough surface है. यहाँ इस surface के साथ एक mass attached है with the spring. It is attached with the spring 1 kg. ठीक है. एक मिनट को इसको एक्चुअली मुझे एक्सटेंड करना. यस. नाउ देखो, मैं एक और चीज बता रहा हूँ. रुको रुको. I'll just draw everything and I'll explain you. ठीक है. I'll draw everything. हाँ. Now इन्होंने बोला है कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0.5 है. ओके. नाउ और k is equal to 50 मीटर सॉरी न्यूटन मीटर. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या है कि एक मास तक सरफेस पे, एक सरफेस में मास था. ठीक है. पहले यहाँ था, जो ये नेचुरल लेंथ है ना उस पे था. ओके. द मास 1 kg was at natural length and it was attached with the spring. Now what I did was I pushed the spring with the, मतलब मैंने उसको पुश किया with what, कहाँ तक पुश किया, 2 मीटर तक पुश किया. मान लो क्या था, नेचुरल लेंथ था, पहले यहाँ था. तो क्या था कि पहले यहाँ था, तो मैंने क्या किया, उसको पुश किया. पुश करने के बाद ये कहा गया, यहाँ गया, 2 मीटर पीछे गए. अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो मैं उस पुश करने के बाद मैं उसको छोड़ूंगा, तो मान लो वो यहाँ आ गया. ठीक है. इस जगह के आके ये स्टॉप हो गया. द क्वेश्चन इज आस्किंग at what distance the block stops. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. क्या है, समझे आप? यस और नो स्टूडेंट, लेट मी नो इन द चैट. क्या हुआ, पहले नेचुरल लेंथ पे था, मैंने उसको थोड़ा दबाया, फिर मैंने उसको छोड़ा. अगर स्प्रिंग के साथ है वो, तो वो क्या आगे आ जाएगा? यस और नो, इट विल कम फ्रंट. नाउ आफ्टर अ व्हाइल इट विल स्टॉप. व्हाई? फ्रिक्शन है. यस और नो स्टूडेंट्स. तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये जो स्टॉप होगा ये कितने डिस्टेंस पे होगा. स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड इट और नॉट? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और नॉट? लेट मी नो इन द चैट. यस और नो स्टूडेंट्स, लेट मी नो. ओके. व्हाट वी आर डूइंग इज, पहले क्या था, देखो मैं इसको ना एक इससे ही बताता हूँ. देखो, ये था आपका मास. ठीक है. ये एक स्प्रिंग अटैच्ड है. पहले ये नेचुरल लेंथ पे था, जो मैं ये बोल रहा हूँ व्हाइट डैश लाइन है, वो नेचुरल लेंथ पे था. तो मैंने क्या किया, उसको पहले दबाया. तो ये स्प्रिंग क्या होगा, अगर स्प्रिंग है तो ये दबेगा ना. अगर ये स्प्रिंग था पहले ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? फिर मैंने इस दबाना छोड़ दिया. आई लेफ्ट प्रेसिंग इट. नाउ इफ देयर इज अ स्प्रिंग इट विल कम फ्रंट. यस और नो? क्या होगा, यहाँ था पहले, मैंने इसको दबाया. ठीक है. मैंने उसको छोड़ा, वो यहाँ आ गया, है कि नहीं? यहाँ आके स्टॉप हो गया समवेयर हियर. यस और नो स्टूडेंट्स? नाउ आफ्टर स्टॉपिंग बेसिकली देयर इज अ डिस्टेंस कवर्ड. यस और नो? देयर इज अ डिस्टेंस कवर्ड. तो मुझे ये बताओ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ, मतलब यहाँ से प्रेस होने के बाद जब मैंने छोड़ा, पहले नेचुरल लेंथ पे था, इनिशियल लेंथ पे था, मैंने इसको दबाया, फिर मैंने छोड़ा, वो यहाँ आ गया, है कि नहीं? तो मुझे ये बताओ इसका डिस्टेंस क्या है, उसका क्या, हाउ वेयर विल इट स्टॉप. बेसिकली इट इज आस्किंग उसका डिस्टेंस क्या है. बेसिकली अगर एक डिस्टेंस है, तो मुझे ये बताओ इसका डिस्टेंस क्या होगा. कैन आर यू विल यू बी एबल टू सॉल्व इट? प्लीज लेट मी नो. Yes or no? So if you're solving it, I'll give you time. Okay. And anyways, the time is running out. Let us launch NPS poll. So please answer the NPS poll while you're solving the numerical. Okay. So students, please let me know, will you be able to solve it? And before ending the class, I'll give you hint how to solve it. Okay. So please let me know.
So I'll be giving you exactly 3 minutes of time. After 3 minutes of time, please let me know whether you were able to solve it or not. Yes. Here's a question. Please answer, and everyone has to answer the NPS. Okay? Your suggestion will make me better day by day. I'm telling you. And your motivation gives me motivation. Okay? Prathamesh, no, that is not the answer. Sorry, not Prathamesh. Purti, that is not the answer. That is not the answer. So students, please answer the NPS. देखो, everyone's suggestion will help him get much better. ठीक है? क्योंकि अगर genuinely आप अपना क्या सजेशन फीडबैक्स दे रहे हो ना, देन आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर. पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किसको फोकस करना है, किस चीज में फोकस करना है कि नहीं. यस. स्टूडेंट्स प्लीज आंसर इट. एनपीएस कर लो. कोई नहीं कर रहा अभी. क्या हुआ? Vishali, Suman, Aishwarya, have you done the NPS? Ashwini, two Ashwinis, and Anjali, Davangere students, Omkar, Arshada, Bagalkot, Ballari, Chitraduga students, Mritula, Nikita, Parth, Prathamesh, केशव, ऋतुजा. ऋतुजा, दो ऋतुजा ऋतुजा है. साक्षी, श्रद्धा, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं. यस. नागेश, शुभम, श्वेता, स्फूर्ति, स्वीटी, तृष्णा, विशाल, लेट मी नो इन द चैट. Okay. See, the thing is how to solve this. Last. Okay, time up, time up. Very good. Okay, Path, very good. Very nice. Yes. So, how to solve this? Okay, how to solve this question? See, basically, what you're doing is you are going to press it as. मैं इसको सजेशन दूंगा कैसे सॉल्व करने के लिए. आई वोंट टेल हाउ टू सॉल्व इट बिकॉज इन मंडेज क्लास विल सॉल्व इट. ठीक है? तो क्या कर रहे हो आप पहले इसको प्रेस कर रहे हो है कि नहीं. तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, एक पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो. यस और नो स्टूडेंट्स, लेट मी नो. अगर आप एक बॉडी को प्रेस कर रहे हो तो पहले पोटेंशियल दे रहे हो है कि नहीं. मैंने उसको छोड़ दिया, इसका मतलब उस पोटेंशियल एनर्जी को वो किस चीज में कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया. यस. यस. एंड उस काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट वेस्टेड अपॉन व्हाई इज वेस्टेड ऑन फ्रिक्शन. फ्रिक्शन है ना एक, तो फ्रिक्शन के ऊपर वेस्ट करेगा. तो आप ये फाइंड आउट करो कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या फाइंड आउट करो. और मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है कि नहीं, बताओ मुझे. लेट मी नो इन द चैट whether there is a force by non-conservative force. Students, is there any force? Arey, sweetie, how can you say no? There is a frictional force, right? Frictional force is a non-conservative force. तो जीरो नहीं होगा. तो आपका जो फॉर्मूला होगा ना, वो होगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल
plus potential energy final minus of kinetic energy initial plus potential energy initial. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. Is it good? स्वीटी आप पता चला? Use this formula. Okay, Vishali, yes, tell me. You want any suggestion or you want to tell something? Yes, friction. Very good, students. So, will you be able to solve this? YouTube students, let me know. Amrita. Amrita, no, that is not the answer. Check it. अच्छा, sweetie. ऐसा बोला आपने. Okay, okay. Good, good. Sorry, okay. Sorry. My bad. ठीक है ना? बुरा मत मानना अभी. गलती से हो गया. Okay. 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 Okay, students, if that is the case, that's all for today. Okay. Let us end our today's session and please study, please do the homework. Yes. So let us talk about the summary of today's session. And before ending, before going out of the class, please answer the NPS also. We have already talked about what? The mechanical energy, what is it? Conservation of mechanical energy. And we came to know that the work done is what? Work done by the external force plus work done by non-conservative force is equal to what, students? Kinetic energy final plus potential energy final minus of kinetic energy initial minus potential energy initial. And we get to know that if these are zero, if these twos are zero, then kinetic energy initial final plus potential energy final is equal to kinetic energy initial plus potential energy initial. These two are very, very, very important formulas for us. So don't forget these formulas. This will help you to solve numerous problems. Okay. Yes, that is a homework. This is the homework. Okay. This is your homework, Aishwarya. Down get students. Okay. So YouTube students, thank you for attending today's class. Let's meet in Monday's class. Okay. Take care till then. Bye bye. Enjoy your weekend. Okay. Must enjoy कर लेना. Yes. Okay. So YouTube students, take care. Thank you. Take care. Bye bye. Yes. Bye bye. Take care. Okay, I'll be ending the session. Okay, just a second. Yes, bye bye, bye bye. Take care. क्या weekend में क्या करोगे सब? Yes, sure, Prathamesh. Bye bye. Students, is there any doubt? If you have any doubt, you can just stay in the class. Have you got any doubt? Anyone has got any doubt? Yes, Ashwini. Bye bye.